Fine. So now the recording is on. So yesterday we learned about the applicability of tax audit, that is section 44AB of the Income Tax Act, clause A to E. Then we understand which which are the things which is included while determining the turnover and which are the things which should be excluded while determining the amount of turnover. Then we understand the liability for the tax audit, right? So it is on the persons whose turnover is exceeding, he or she has to carry out the tax audit, or it may be a firm, or it may be a company, whatever it would be. If this threshold limits, which is prescribed under section 44AB, if it is exceeds, then obviously it is required to get the books of accounts audited. The auditor, and then we at the last yesterday we were discussing about the auditor. The audit shall be conducted by an accountant as explained under section 288 of the Income Tax Act 1961. Proviso to section 44AB lays down that where the accounts of an SSC are required to be audited by or under any other law, it shall be sufficient compliance with the provisions of these sections if such person gets the accounts of such organization audited under such other law before the specified date and furnishes by that date the report of the audit as required under such other law and a further report by an accountant in the form prescribed under these sections. सो जिसको भी अदर लॉ एप्लीकेबल है उनको अपना ऑडिट अदर लॉ में तो करवाना ही है, और इस यहाँ पे भी 44AB में भी करवाना है. In the case of any SSC like cooperative society where the accounts under the relevant law are allowed to be audited by a person other than a CA, the statutory auditor need not be a CA. However, the tax audit can be carried out by an accountant only. So here the accountant meaning is only the chartered accountant. So section 288 subsection 2, the meaning of the term of the accountant. So the accountant means a chartered accountant as defined in section 2 of the Chartered Accountant Act 1949 who holds a valid certificate of practice. But does not include, लेकिन उसके अंदर वो लोग include नहीं हो सकते, means in case of an SSC being a company, a person who is not eligible for appointment as an auditor of the said company in accordance with the provisions of section 141 subsection 3 of the Companies Act 2013. So all of you have learned in TYBCom semester 6 in the company audit that the section 141 subsection 3 talks about the disqualification, and there are sub clauses, clause A to I. That's so if any of this qualification is distracted, then that person cannot work as a tax auditor as well, particularly in case of a company. In any other case, right, अगर ऐसी कंपनी है तो आपको सेक्शन 41 का भी देखना है. In any other case, SSC himself, or in case of SSC being a firm, AOP, HUF, or any partner of the firm or the member of AOP or HUF. So अगर कोई AOP है, फर्म है, तो उसका पार्टनर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड प्रैक्टिस है, बट वो टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता. In case of an SSC being a trust or institution, any person referred to in clauses A, B, C or CC of the subsection 2 of section 13. तो section 13 में जो दिए है वो पर्सन भी नहीं बन सकते in case of trust, means the trustees or the person who is interested into the SSC, right? So they are also disqualified to be appointed as an auditor, even though they are the chartered accountants holding a valid certificate of practice. In case of any persons other than the persons referred to
in sub clause 1 and 2, ये दोनों के अलावा, the person who is competent to verify the return under section 139 in accordance with the provisions of section 140, right? So the person who is verifying the return cannot become the chartered accountant or the tax auditor. Any relative of a person's referred to in clause 1, 2 and 3, इनके relative भी है, वो भी right नहीं आ सकते. An officer or an employee of the SSE, an individual who is a partner or who is in employment of an officer or an employee of the SSE, an individual who or his relative or partner is holding any security or interest, right, in the SSE, provided that the relative may hold a security or interest of an SSE of a face value not exceeding 1 lakh rupees, is indebited to the SSE, provided the relative may be indebited to the SSE for an amount not exceeding rupees 1 lakh, or has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the SSE, provided that the relative may give a guarantee or provide a security in connection with the indebtedness of the third person to the SSE for an amount not exceeding 1 lakh rupees. A person who directly or indirectly has a business relationship with the SSE of such nature as may be prescribed, or a person who has been convicted by the court for an offense involving a fraud and a period of 10 years has not been lapsed from the date of such conviction. So if you look at to this, right, all are the disqualification which is as per section 141 subsection 3 clause A to actually ई तक की बात है, ई एफ तक की बात है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है वही सेम कंटिन्यू हो रहा है. इफ यू एबल टू रिकॉल विच यू हैव लर्न इन लास्ट सेमेस्टर, एम आई राइट? यस सर. ना, ये वही चीजें है जो यहाँ पे भी टैक्स ऑडिट में भी एप्लीकेबल हो रही है, राइट? मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ रिलेटिव, राइट? लेकिन यहाँ पे रिलेटिव का टर्म का मीनिंग अलग है, और जो हमने लास्ट ईयर जब आप कंपनी ऑडिट में थे वहां पे रिलेटिव्स का मीनिंग अलग था, क्योंकि वहां पे रिलेटिव्स आपको एज पर कंपनीज एक्ट देखना था, दैट इज सबसेक्शन, दैट इज क्लोज टू, सॉरी, सेक्शन 2 क्लोज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे रिलेटिव्स का डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स के हिसाब से देखना है. तो इनकम टैक्स में रिलेटिव्स का डेफिनेशन स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, brother and sister of the spouse of the individual, any lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendants of the spouse of the individual, or spouse of a person referred to in clause B, C and D and E. Right? So यहाँ पे उन सब के spouse है वो भी, और any lineal है ना descendant of a brother or sister of either of the individuals or spouse of the individual. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेटिव्स की डेफिनेशन में बहुत ही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. अगर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन आप रिलेटिव्स के देखने जाओगे तो बहुत ही सिंपल है. वहां पे लिखा हुआ है स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ, देन मदर एंड फादर, sorry, mother and father, yes, and then brother and sister, son, son's wife, daughter and daughter's husband. That what is the definition under the Companies Act of the relative. But in income tax, this is very, very wide definition. Are you able to understand, dear students, this? यस सर. Yes. है ना? तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट? चलो, specified date for filing the audit report. This is applicable to the auditor, right? That is the 30th September of the relevant assessment year. The due date of furnishing the return of income under section 190, sorry, section 139 subsection 1. देखिए ये थोड़ा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अलग से है. Now what is happen is the submission of the tax audit report is 1 month before the due date of filing the return of income, है ना? So the
in case of the SSE to whom the tax audit is applicable, the due date of filing of the return of income is 31st of October. And that's the reason as the SSE to whom जो भी पर्सन है जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31st ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. तो इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर जिसको टैक्स ऑडिट है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है वन मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. एज द जो एसएससी है जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो वहां से एक महीने पहले इसका मतलब कि 30 सितंबर of the relevant assessment year becomes the due date of filing the return of income for filing the due sorry 30th September will become the due date of filing the tax audit report by the auditors. Is it clear बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Penalty for not getting the accounts audited as required under section 44 AB, then the penalty will be levied under section 271B. If a person fails to get his accounts audited in respect of any previous year or years relevant to an assessment year or furnish a report of such audit as required under section 44 AB, the assessing officer may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 0.5% of the total sales, turnover or gross receipt as the case may be in business, and of the gross receipt in case of profession in such previous year or years, or a sum of rupees 1,50,000, whichever is less. तो इतनी पेनल्टी लग सकती है आपको. सो अगर 10 करोड़ का टर्नओवर है तो 10 करोड़ का टर्नओवर होगा तो अगर उसका आप 0.5% करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख. 5 लाख 5 रुपए. लाख 5 लाख रुपए और a sum of rupees 1.5 lakhs or 1.5 lakh. Whichever is less means 1.5 lakh will be the penalty if you are required to get your books of account audited. You does not get your books of accounts audited. Then this penalty will be levied under section 271B. The forms of report. The audit under section 44AB requires that the tax auditor should report whether in his opinion the particulars in respect of the form 3CD are true and correct. It is the primary responsibility of the SSC to prepare the information in form 3CD. So 3CD बनाने की जवाबदारी SSC के. There are two forms actually. The forms of the tax audit, the forms of audit report. Here, when I say the report means the tax audit report. So यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात चल रही है जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर कारोस 2022 है उसी हिसाब से यहाँ पे सॉरी कारोस 2020 है वहां पे यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को हम बोलते हैं 3CB और 3CA. But there is an annexure to 3CA or 3CB that is known as a 3CD, right? So you need to understand कि 3CD annexure है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है. ऑडिटर उसको इवेल्यूट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इंश्योर करके. तो 3CD बनाने की जवाबदारी एसएससी की होती है. ऑडिटर उसको रिव्यू करता है और अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है ना. So the auditor has to examine whether the information given is true and correct. The form 3CD is not a report of the tax auditor. है ना. टैक्स ऑडिटर का वो रिपोर्ट नहीं है. The report is in the form of 3CA or 3CB depending upon the nature of the organization of the entity. So there are two forms of tax audit report. One is known as a 3CA,
another is 3CB. When the 3CA is used, if a particular entity or the SSE to whom the tax audit is applicable as per section 44AB, if that entity is also required to get their books of account in any other law, then 3CA will be applicable. तो अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम टैक्स के अलावा किसी और लॉ के हिसाब से उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना है, जैसे कि कंपनी, तो कंपनी को अगर 44AB एप्लीकेबल हो जाता है तो उसका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होता है उसको 3CA होता है. सेम वे ट्रस्ट इज ऑल्सो, अगर कोई ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो जनरली वो यहाँ पे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर, गुजरात में वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ होगा. तो वो जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट है वो मैंडेट करता है, वो मैंडेट है उसके अंदर कि जो भी ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना है. तो अगर ट्रस्ट को भी 44AB एप्लीकेबल होता है तो जो उसका टैक्स ऑडिटर है वो 3CA इश्यू करेगा. सेम वे कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रिक्वायर्स मैंडेट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है. तो ऐसी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वो किसी अदर लॉ के अंदर ऑडिट करवाने होते हैं और अगर उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए होता है फॉर्म नंबर 3CA. और ऐसी एंटिटी है जिसको सिर्फ 44AD में ही ऑडिट करवाना है और दूसरे किसी लॉ के अंदर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस सर्कमस्टेंस में ऑडिटर विल इश्यू अ 3CB. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Right. If the tax auditor is satisfied that the information contained in 3CD is true and correct, then he give a unqualified report in from 3CA or 3CB saying, in my opinion, and to the best of my information, according to the explanation given to me, and considering the materiality and the particulars given in form number 3CD are true and correct, तो फिर वो दे देंगे forms, है ना. तो 3CA and 3CD for the person carrying on a business on person who are required, है ना, under any other law to get their books of accounts audited, and form number 3CB and 3CD for others. तो जिस ऑडिट करवाना है उसमें 3CA होगा, बाकी 3CD is common, वो तो दोनों में रहने वाला है. So this is a 3CD. The statement of particulars given in form number 3CD as an annexure to the audit report contain 44 clauses. उसके अंदर 44 clauses है. The tax auditor has to report whether the particulars are true and correct. उसके अंदर जो 44 items है वो सारी के सारी उसको examine consider करनी है. Right? मुझे लगता है यहाँ पे वो सारी information शायद दी होगी. Right? चलो. So consideration for an SSE while preparing the form number 3CD. SSE को बनानी है. It would be advisable for the SSE to take into consideration the following general principles while preparing the statement of particulars. He can rely upon the judicial pronouncement while taking any particular view about the inclusions or exclusions of any item in a particulars to be furnished under any of the clauses specified in form number 3CD. If there is a conflict of judicial opinion on any particular issue, he may refer to the view which has been followed while giving a particulars under the specified clauses. The accounting standard, guidance notes, standards on auditing issued by the institute from time to time should also be followed. वो भी आपको follow करने पड़ेंगे. Consideration for an auditor while furnishing the particulars in form number 3CD.
While furnishing the particulars in Form 3CD, it would be advisable for a tax auditor to consider the following. है ना, ये सारी चीजें उसको कंसिडर करनी चाहिए. आपको 7 दी गई है, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. If a particular item of income and expenditure is covered is more than the one of the specified clauses, care should be taken to make the suitable cross reference to such item at an appropriate places. ये थोड़ा समझना मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन क्या आपको लाइव 3CD और 3CA देखना है? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है. Okay, sir. Fine. So let me stop the recording. Or I request